Hello everyone, today I am going to start a new subject in which, and that subject is very important for an individual, for a community, for a society, for a country, for the whole world. I just give you the hint. That's play a very vital role in the development and the growth of a country on the globalization. So that is nothing but an economy. And that's nothing but Arthashastra. That is nothing but an Arthashastra. Okay. So that is actually a branch of social science. That deal with the study of the production. Branch of social science deal with the study of production, distribution and utilization or consumption of the goods and services. So the branch of social science dealt with the study of the production, distribution and utilization or consumption of goods and service. Actually, Arthashastra. Study of this social science that deal with the study of production, distribution and utilization of the or consumption of the goods and services, that is known as an economy. So actually economics, the word economy come from the economia. Origin is from Greek word. Greek word means economia. That means management of wealth. वेल्थ का मैनेजमेंट, धन का प्रबंधन, मतलब पूंजी, हिंदी में बोलेंगे का प्रबंधन. ओके. सो इकोनॉमिया एंड फादर कौन है इसके? पिताजी थे इसके अदिम स्मिथ जी इनके पिता थे, जिसने एक बुक लिखा था नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से. वेल्थ ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र का पूंजी. ओके. अब देखिए, एक्चुअली में इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़, गुड एंड सर्विसेज का, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग जगह में, अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में, फिर उसका यूटिलाइजेशन हुआ, प्रॉपर कंजम्पशन हुआ जो गुड्स सर्विसेज हैं. दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स. इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स करते हैं. ओके. नाउ एक्चुअली में production of goods, in other words we can say that यहाँ पे गुड एंड सर्विस को जगह हम बोल सकते हैं कि कैपिटल का यूटिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. तो अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ बोला गया एक्चुअली में मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ. तो क्या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ का क्वेश्चन है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. Okay. Now see that equal distribution is equals to of wealth equals to proper management of wealth. ये देखना है क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल्स टू प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब सभी को बराबर वेल्थ लगे जाए तो क्या वो प्रॉपर मैनेजमेंट वेल्थ का नहीं है. क्योंकि घर में अगर बात किया जाए, एक घर में बात किया जाए तो एक फादर है, एक मदर है, एक डॉटर है. फादर अगर कमाते हैं मान लो 6,000, मान लो 30,000 रुपये कमाते हैं, तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए 30K कमाते हैं. ओके. तो फादर का इनकम है
पर मंथ। तो अगर सबको 10K दे दिया यार 10,000 बराबर है नहीं, क्योंकि इनका इट्स नॉट इक्वल. Why equal distribution not good? Because daughter require less money. That means require only 3K. So 10 minus 3K equals to 7K of useless. Okay. She require more. If you distribute, so it's not possible. So equal distribution of wealth is not equal to proper development of wealth. Distribution of wealth on the basis of need equals to proper management of wealth. Okay. Now see the next topic is different type of an economy. अब देखिए कि we are going to see the different type of an economics. So first I would like just to say that an economics is of two types. One is micro and it is micro. Economics is of two types. One is micro, another one is macro. Okay. So microeconomics is an economics. We deal with the study of the needs and the demand, or the study of the need of an individual in a country and effect of our needs or his needs on the country, supply or demand or price of the goods or service of. Okay, individual का क्या मतलब जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल्स का क्या नीड है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड सप्लाई पे और प्राइस ऑफ थिंग पे, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब एक पार्टिकुलर पर्सन स्टडी ऑफ इंडिविजुअल नीड्स एंड इफेक्ट ऑन डिमांड सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द गुड and service in the country. Or it's called micro. Here study microeconomics is the study of the economic activities of a society, a country, or a state, and effect on demand, supply and price of good and service of a country or society. जैसे हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल्स की नीड्स बढ़ेगी घटेगी, उससे कोई मार्केट को असर नहीं पड़ने वाला. इंडिविजुअल्स के परचेज Pepsi, okay? Purchase of bottle of Pepsi does not impact on the demand and supply or price of the Pepsi, but purchase of bottle for a community, of course, that impact the demand and supply for a life. Okay, so here we basically see in microeconomics a term like inflation. Inflation is nothing but rate of rise in price of good and service with respect to time. मतलब समय के साथ दाम का भाव का बढ़ना है ना, गुड सर्विस टाइम्स को इन्फ्लेशन बढ़ने से पूरे इम्पैक्ट पड़ता है पूरे इकोनॉमिक्स पे. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सोसाइटी कंट्री एंड स्टेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड सप्लाई. ओके, महंगाई बढ़ने से क्या है पूरे देश में असर पड़ता है, इसीलिए मतलब पूरे एक मास को इफेक्ट करता है. इफेक्ट मास को इफेक्ट करता है. ओके, ठीक है ना, मास को ये इफेक्ट करता है. इस तरह बात करते हैं हम दूसरा बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है.
स्टेटमेंट है, ये आर्टिकल 112 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान करके इसको यूज़ करना है 112 में, ठीक है ना। बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट निकालती है कि कहाँ से इसको इनकम आएगा और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस क्षेत्र में, किस डिपार्टमेंट में। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिक्स, बजट कहा जाता है। सो बजट पढ़ने से बजट हर साल में आती है, तो हम सभी जो देश के नौजवान हैं, जो लोग हैं, यहाँ के जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, सभी को कुछ आशा रहता है कि बजट में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी देश के लिए, उनके हित में, है ना। पेट्रोल का सस्ता होना, डीजल का सस्ता होना, किराया भाड़ा सस्ता होना, सामान का खरीदारी सस्ता होना, तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। सिलेंडर का दाम कम होता है ना, ये सब चीज़ बजट में मेंशन रहता है। सिमिलरली टैक्स के बारे में, टैक्स जिसका पहले वैट था, CGST आती है और SGST मिला के GST बना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉमन टैक्स है। तो टैक्स बढ़ने से घटने से पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए टैक्स हमारा किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सिमिलरली जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारा टैक्स है, रेवेन्यू टैक्स बढ़ने से तो है ना, तो वो डिपेंड करता है। सिमिलरली पॉवर्टी, गरीबी बढ़ने से इसको हम कर बोलते हैं, इसको मतलब किससे बोलते हैं? पॉवर्टी में गरीबी बोलते हैं। गरीबी है मतलब पॉवर्टी, पॉवर्टी बनने से प्रॉब्लम आते हैं कि खाने के लिए बेरोजगारी, फैमिन आ जाएगा, खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं, पढ़ने के लिए सही तालीम नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं रहेगा। ओके, लैक ऑफ नीड्स मतलब पूरे नहीं कर सकते हैं गरीबी बनने पे, तो पूरे देश में इम्पैक्ट करता है ना। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा चीज़ लाना पड़ेगा कि हमारा पॉवर्टी लेवल कम हो, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, कहीं और कटौती करके वो जो PPL है, जो पॉवर्टी लेवल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, तो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है ना, क्योंकि GST जो फंड करते हैं हर चीज़ देखते हैं। सिमिलरली पॉपुलेशन, जनसंख्या बोलते हैं इसको, जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारी परेशानी बढ़ जाती है हमारे देश में। ऐसे भी दुनिया के सेकंड पोजीशन पे पॉपुलेशन, ऐसा माना जाता है कि 2030 के बाद इंडिया जो है नंबर 1 पॉपुलेशन ग्रोथ में हो जाएगी। ओके, तो पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारी समस्या आती है, पूरा देश को इम्पैक्ट करता है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा किसी चीज़ का, है ना। सप्लाई तो लिमिटेड है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है हमारा, है ना, रिसोर्स लिमिटेड है और सप्लाई बढ़ेगा, जैसे डिमांड भी बढ़ेगा तो परेशानी बढ़ेगी। सिमिलरली नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम बढ़ गया तो ये पूरा हमारा इम्पैक्ट करता है हमारे दोस्तों। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन माइक्रोइकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल नीड्स एंड इम्पैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन द प्राइस एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड इन फॉर अ कंट्री. Like purchase of a bottle of Pepsi does not impact on a demand and supply for Pepsi in that society. Okay, but study of an economics activities that impact the society or the state or effect on demand and supply or price of the goods and services of a country, that is under macroeconomics, like inflation in economic activities that of course rise in inflation there is the poor people cannot purchase anything, price of inflation will be happen, then the rise of the rise in the price of goods and services with respect to time will be high. Budget, of course, every year we are eager to waiting for the budget that the government may introduce in some new thing, new concept may increase the price of the goods and services like railway fare or the airport fare, airplane fare or the railway fare or the bus fare or the LPG cylinder prices to provide more subsidies. So it is mentioned in the budget. Budget is nothing but the annual statement, financial statement, which is mentioned in the Article 112 of the Constitution. Okay, like tax. Tax also impact a large amount of society. Like GST, recently government 2 year back has implemented GST instead of various tax. They have combined into one tax GST, which is division of service CGST, that's central goods and service tax, and state government's service tax. Like poverty, if there is an increase in the poverty, of course the GDP will be low and the average national income will be low, and the more and more people cannot fulfill their needs. So there may be a situation of the famine and illiteracy rate. So of course the economic growth of the country will go as and if the poverty is now. So government has to do something, have to bring something to eliminate the elements, and for which government has to bring some scheme to eliminate the poverty, and for which government has to cut some fund from other activities and invest in like population next activities impact the whole society, because the population increases and the demand of goods increases, but we know that resource is limited, so supply is limited. And we can, if we increase the supply, then we are not on the sustainability of resources like national incomes, and so it's impact the whole society, like Macroeconomics and all these things the government has introduced. Okay, it's going to give employment opportunity. Now we will see
see one thing that father of microeconomics is Ragnar Frisch, and it is J.M. Keyes. Keynes is the father of macro, and this is Friedrich is the father of father of Indian economics is the P.V. Narasimha Rao. Father of Indian economics, who has implemented various economics activities ideas which prevent our country from the loss of recession under the P.V. Narasimha. In that time he is the Prime Minister, Pradhan Mantri means Prime Minister at that time, okay? And Dr. Manmohan Singh is known as the father of Indian economics reformer. So Dr. Manmohan Singh is the father of Indian economics reformer. Okay, now we'll see that next. सो 1924 में क्या हुआ था, विलियम एक्वार्ड थे जिसने बजट को जो है तो बजट को बांट दिया था, एक जनरल बजट में, एक रेलवे बजट में। फिर जो कि एनडीए गवर्नमेंट बनी जो बीजेपी की 2017 में, फिर इसने मर्ज कर दिया दोनों बजट, एक जनरल बजट और एक रेलवे बजट को, ताकि इनसे समय और पैसा दोनों बच सके। ठीक है, ये एनडीए गवर्नमेंट ने किया अभी 2017 में। बहुत अच्छा सवाल है कि जनरल बजट और रेलवे बजट का अलग हुआ था बजट से, तो वो 1924 में विलियम एक्वार्ड से कहने पर हुआ था। अच्छा, 24 से आया एक चीज़ और कि 1921 को कहा जाता है पॉपुलेशन ईयर ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड। क्यों? क्योंकि उस समय पॉपुलेशन की बहुत ही रेट में गिरावट हुई थी ड्यू टू फेमिन। 1920 में फेमिन आ गया था, एक्चुअली में फेमिन, तंगी बोलेंगे, भुखमरी आ गया था, फेमिन और सूखी पड़ गया था। कहाँ? वेस्ट बंगाल में, इसकी वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। 1924 में पॉपुलेशन डिविडेंड हुआ था, पॉपुलेशन ड्रॉप हुआ था, है ना। तो ये सब इंडिया गवर्नमेंट मस्ट किया। ठीक है, जाओ देखिए कि विच बॉडी कंट्रोल इन्फ्लेशन इंडिया में जो महंगाई दर सुकून कंट्रोल करता है आरबीआई के द्वारा जो अपॉइंटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जिनके रिकमेंड पे जो है रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट और वैरी क्या कहते हैं, वैरी के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। अब आगे क्या है, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व इंडिया। इनकी स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1934 में। हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। लेकिन 1935 में हुआ था इसका, 35 में, और 1937 में जो है हेडक्वार्टर इसका मुंबई आ गया, मुंबई में आ गया। और 1949 1 जनवरी इसको नेशनलाइज कर दिया गया। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, आरबीआई के कारण जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन
रेगुलेट करता है, जिसके मुताबिक जो अदर बैंक है इंडिया में, SBI हो गया, IDBI हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे को ये कंट्रोल करता है। इसके रूल्स के मुताबिक ही ये बैंक सब चल सकता है इंडिया में, वरना कोई नहीं चलेगा। दैट मीन्स in the year 1924, on the recommendation of the William Ackworth, the budget is divided into two types, that is general budget and the review budgets. But in the year 2017, ND government, that is the BCP, comes to power in 14, and in 2017 he has merged two budgets. That's on the recommendation of Niti Aayog, I think, and it saved a lot of money. So in the from 1924 we get 1921. It is called year of population dividend, due to because there is a famine and drought-like condition which prevailed in the year 1920 in the part of the West Bengal and Bihar. Next question: which body control inflation in India? Actually, it's controlled by the RBI, Reserve Bank of India, who has appointed monetary policy committee, which mainly control the inflation rate by varying the repo rates and interest rate. Okay, now comes the RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. Actually, Reserve Bank of India is formed in the year 1935, whose headquarters in Kolkata. Okay? Kolkata, and but in the year 1937, whose headquarters is changed to Mumbai, and on the 1st January 1949, but on 1st January 1949 it is nationalized throughout the India. Actually, initially it is only the some part of India, but in the year 1949 it's nationalized. Okay, and you know RBI have set the rules and regulations. RBI set the rules and regulations as per which the all other Bank of India will be have to follow. Otherwise, they don't have to follow. The bank which are not following the RBI doesn't have to run or start up their economic activities in India. So next we will see the different sector of the economics.
Hello. Now we will see the various sector of the economics. So in economics, there are basically the three type of sector. So three sectors is there in economics. First one is the primary, second one is the secondary, and third one is tertiary or the service sector. So one is the primary, secondary, and service sector. It is also called tertiary. There, it is called Prathamic sector. Prathamic, Dvitiya, or Tritiya. Okay. So in primary sector, basically, which provides us the raw material, provides raw material, जिसमें कच्चा सामान बनता है, raw material. Directly provide raw material like agriculture, okay, which is called कृषि in Hindi, कृषि, animal husbandry, that is called पशुपालन. Second one is sericulture or fishing, poultry farm, मुर्गी पालन. So and finally, or we can also include mining and quarry. So in all these cases, we are just getting the proper raw material. Okay. So basically, in primary or Prathamic sector mainly, which provides the raw material, जो कच्चा. So in the primary sector mainly, which provide the raw material, जो कच्चा माल हमें जिससे प्राप्ति होता है mainly. जिस तरह माइनिंग से एक शब्द आया कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ है पता है? नागपुर में है. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ है? नागपुर में है. सो ये सारी चीज़ प्राथमिक है. सेकेंडरी रिसोर्स एक्चुअली मीन्स क्या है? विच यूजेस द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी and to produce the finished goods. Okay. Secondary source mainly industry हो गया, industry sector जो production करता हूँ mainly. ये production करता हूँ mainly, which uses the raw material, for processing to get a finished प्रोडक्ट. ओके. यहाँ पर जो प्रोसेस करता है यूज़ करता है उस रॉ मटेरियल को जो कि प्राइमरी से मिला है, और उसको प्रोसेस करने के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. जैसे बात करें तो हम माइनिंग से हमें मिलता है बॉक्साइट को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम एल्युमिनियम निकालते हैं. फिर एल्युमिनियम से इंडस्ट्री में ले जाके हम बनाते हैं यूटेंसिल, व्हीकल्स बॉडी पार्ट है ना, व्हीकल बॉडी. इस तरह उस तरह आयरन से हेमाटाइट से आयरन मिलता है, इससे बनाते हैं कुछ भी, इससे भी कुछ शिकर बनाते हैं, बोल सकते हैं कुछ भी. बेसिकली व्हाट वी सी दैट, जैसे हम स्टील की बात करें, स्टील से हम स्टील ही बनाते हैं. ओके. ऑल दिस थिंग वी आर इन द सेकेंडरी मेनली the industry, which are the source of industry, which uses industry for the production of goods and services, the raw material to provide goods and services. Okay. And third one is the tertiary sector. Actually tertiary sector ऐसा sector होता है जो कोई पैसा लेके या कुछ देके हमें सर्विस प्रोवाइड करता हो. ओके. जैसे बैंकिंग सेक्टर, रिटेल स्टोरेज हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना. जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग की बात करें हम, बैंकिंग में क्या है? जहाँ पे हम पैसा को सेव करते हैं, उसके बदले हमें पैसा भी देना पड़ता है. पैसा अगर जमा करते हैं, लोन लेते हैं तो पैसा देना पड़ता है, और जमा करते हैं तो मिलता है. रिटेल स्टोर हो गया, एजुकेशन हो गया, जहाँ हम पैसा देके पढ़ते हैं, सर्विस हमें मिलती है. ठीक है ना. हॉस्पिटल हो गया,
हॉस्पिटल हो गया, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, हम पैसा देके हम वहाँ खाने जाते हैं हॉस्पिटल रेस्टोरेंट वगैरह में। जैसे डी हो गया बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जहाँ पे सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, जैसे हमारा हो गया एयरवेज हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर रहते हैं। जैसे टूरिज्म हो गया। सो सिमिलरली रियल एस्टेट का धंधा, रियल एस्टेट हो गया, सारा हमारा सर्विस टर्सरी में आता है, इसमें इन विच सर्विस टर्सरी में क्या होता है कि हम पैसा देते हैं और हमें एक सर्विस मिलता है। तो जैसे हम बैंकिंग की बात करें जहाँ हम पैसा देते हैं, रखते हैं, वहाँ पे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, है ना, चाहे हम लोन लेते हैं जिसके बाद हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसका इंटरेस्ट इस तरह रिटेल स्टोर से हम कुछ सामान खरीदते हैं, इसके वजह पैसा देना पड़ता है। एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन में हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पैसा मिलता है। हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट कराने जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, चाहे पैथोलॉजी वगैरह में, पैथोलॉजी में तो चाहे बीपी में कॉलिंग सेंटर होता है जिसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। सॉफ्टवेयर बनता है, उसके वजह में पैसे लेते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, एज पर द नीड ऑफ द कंपनी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, हॉस्पिटल होता है, रेलवे स्टेशन। ओके, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, तो जो हम एयर सर्विस एयरवेज हो गया, हम लोग एयरवेज में पैसे देते हैं टिकट का, सर्विस के लिए हमें मिलता है कहीं दिल्ली से गोवा जाने के लिए। रेलवेज में हम लोग सफ़र करते हैं, इसके लिए टिकट का पैसे देते हैं। इसी तरह टूरिज्म में हम वहाँ पे हैं अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेसेज में, उसके लिए पैसा जाता है। रियल एस्टेट, ये सारी जो सर्विसेज है, ये बेसिकली ये सर्विसेज जो है बेसिकली कराती है सर्विस सेक्टर। ओके, अब हम देखेंगे कौन सा देश कौन सा सेक्टर में आता है। तो हम इकोनॉमिक्स सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा देश कौन सा इकोनॉमिक्स सेक्टर है। इस तरह कहा जाता है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इंडिया का जो इकोनॉमिक है वो कृषि आधारित इसलिए है कि 50% जो पॉपुलेशन है यहाँ के मेनली प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। जो इंडिया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, 50% से जो पॉपुलेशन है ना, तो इसमें इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। चाइना जो है एक्चुअली में चाइना सेकेंडरी में आता है, क्योंकि इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमिक्स है वहाँ, इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमिक्स इकोनॉमी है। 50% से ज़्यादा जो वहाँ है लोग, मोर देन 50% देन 50% वर्कर्स इन सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी इकोनॉमिक्स सेक्टर, इसलिए मोबाइल से लेके हर चीज़ कहीं से आता है। इसी तरह टर्सरी चाहे सर्विस बात करें तो अमेरिका जो है यूएसए में भी यहाँ पे मोर देन 90% वर्क करते हैं इसके इस सेक्टर में। ठीक है, तो कहा जाए कि जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो है सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर मतलब सर्विस, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, उसमें सबसे ज़्यादा सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद सर्विस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इज इंडस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर। Why? Because इंडस्ट्री मीन्स उद्योग। इसलिए कि हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से निकलता है, ऑब्जर्व करता है, तो अगर 5 रुपये केजी बेचते हैं और अगर उसको मार्केट में बेचेंगे तो 6 रुपये बेचेंगे कच्चा माल। अगर उसी को हम प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बना लिए, मान लो, और प्रोडक्ट जब बनने के बाद अगर हम उसको 100 रुपये में बेचते हैं, 95 रुपया हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट ठीक ना, वैसे 5 रुपये केजी हम बीज बेच रहे हैं, ठीक, मार्केट में बीज बेचे 6 रुपये केजी। हम इसका कॉर्नफ्लेक्स बना लिया, इसका हम मान लो कॉर्नफ्लेक्स बना लिए, चाहे हॉर्लिक्स बना लिए, हॉर्लिक्स तो ये 500 रुपये पर केजी बिकेगा, तो प्रॉफिट है। तो ये मेनली प्रोसेस करेगा, ये इंडस्ट्री, ये सेकेंडरी सेक्टर ही कर सकता है इस चीज़ को प्रोसेस।
इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इस तरह अगर बात करें हेमाटाइट की, हेमाटाइट अगर 50 रुपये पर केजी बिक रहा है, अगर उसको हम मोटरसाइकिल बना दें और उसको बेचेंगे अगर हम 60,000 में, तो जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल कहाँ से बनाइए, इंडस्ट्री सेक्टर से बना ना, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर से बना, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी सेक्टर। अब हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन, अलग अलग कंट्री में भी कौन सा इकोनॉमी चल रहा है। इकोनॉमी को तो हम देखते हैं अलग सेक्टर देखेंगे, इकोनॉमिक्स कौन सा है, ओके। और हम बताएंगे कि जो वाई इज सेकेंडरी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रॉ मटेरियल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्रोसेस एंड फाइनली फिनिश प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप विच कंट्रीब्यूट टू मोर टोटल और टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। सेकेंडरी सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के कारण क्या हो रहा है, मोर एंड मोर फिनिश गुड्स प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसके कारण उसका जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक का जो डबल ट्रिपल हो जा रहा है जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक्स, समझे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि IMF की फॉर्मेशन फाउंडेशन 1969 में हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो जीडीपी कैलकुलेट करता है, जीडीपी कैलकुलेट करता है, उस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसका 1969 में हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका WC वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट में, वाशिंगटन DC उसको बोलते हैं, वाशिंगटन DC इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC मीन्स वाशिंगटन DC है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया है ना, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया दैट्स कॉल्ड WC, वाशिंगटन DC बोला जाता है इसको, वाशिंगटन DC। कैलिफोर्निया इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन, ओके। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, करेंसी ऑफ इंटरनेशनल रिलेटिव्स का करेंसी क्या है हमारा SDR है, SDR हमारा सप्लीमेंट्री स्पेशल ड्राइंग राइट्स, करेंसी ऑफ इंटरनेशनल स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, एक करेंसी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो पेपर बोर्ड हो सकता है। Origin exchange or assets to be defined and maintained by IMF. Okay. Now we will see the economics. Okay, now we will see the economics that is on divided by the basis of the contribution of society. Okay. Now let's see. If we divide the economics on the basis of the society, then it is capitalist, capital, socialist, and mixed economy. Capital is called Punjikati. So Punjikati is small body. And it is called mixed economy. Okay, so mixed economics. So resource इसमें क्या है, resource owned and run by private individuals and body. इसमें क्या है, resource run by private individual body के बारे में। आपका resource run and run by private individuals, it is called means private individual और body। है ना, यहाँ पर resource एक जो है
कोई जो साधन है, कोई इंडस्ट्री है जो खुद एक आदमी के द्वारा चलाया जा रहा हो, या कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई बॉडी हो, जहाँ पे पॉलिसी जो है कंट्रोल किया जा रहा है, पॉलिसी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, नियम कानून। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो प्राइवेट खुद कंट्रोल करता है। सोशल वायलेंस, एवरीथिंग इज रन एंड ओन बाय गवर्नमेंट। पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट क्या है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक ही बोलते हैं। एवरीथिंग रन अराउंड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। पॉलिसी फॉर्मुलेशन बाय गवर्नमेंट। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी आता है यूज कार्ल मार्क्स ने दिया है। कार्ल मार्क्स दिया था, इसने डास कैपिटल लिखा था, डास कैपिटल वो दिया था। इसमें क्या है, बहुत हो सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट। वर्ल्ड का 90% इकोनॉमिक्स जो है वो मिक्स इकोनॉमिक्स है। फिर इंडिया इज मिक्स इकोनॉमिक्स। इंडिया का इकोनॉमिक्स कैसा है, मिक्स इकोनॉमिक्स है। वर्ल्ड का भी 90% इकोनॉमिक्स है ना, 90% इकोनॉमिक्स है मिक्स इकोनॉमिक्स। देखिए कैपिटल में क्या होता है कि प्राइस बढ़ता है। कैपिटल में क्या होता है, एक्चुअली में प्राइस बढ़ेगा, किसी चीज़ का दाम बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। चाहे गुड्स की वैल्यू भी प्राइस की वैल्यू बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट प्राइस भी बढ़ेगा। मतलब प्राइस में कॉस्ट प्राइस बढ़ा, तो यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है। यहाँ पे मोर करप्शन है, यहाँ पे करप्शन नहीं है। प्राइस यहाँ पे कम रहेगा, मोर करप्शन। ये मोर कम्पिटिटिव, चीप भी रहेगा, क्वालिटी भी रहेगा, प्राइस लो रहेगा। क्वालिटी हाई रहेगा, प्राइस लो रहेगा। तो कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने लास्ट कैपिटल लिखा था, इसमें ड्रॉबैक ऑफ कैपिटल्स लिस्ट एंड एडवांटेज ऑफ सोशलिस्ट के बारे में दिया था, मुझे कंसेप्ट में दिया था कि जो चाइना में है ना, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे जो है रिसोर्स ओन एंड रन बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, बट पॉलिसी फॉर्मुलेशन निकाली बाय गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला ने लिखा था, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दैट स्टार्टेड इन माय लाइफ, लेटर व्हाई आई एम हिंदी। नेल्सन मंडेला ने लिखा था, A long walk to freedom. A long walk to freedom or struggle for my life. This is Nelson Mandela. अच्छा,
दो टर्म है यहाँ पे, शशि थरूर ने लिखा था वाई आई एम, शशि थरूर ने लिखा था वाई आई एम, शशि थरूर ने लिखा था नॉन माइक्रोइकोनॉमिक्स ओपन इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, क्लोज इकोनॉमिक्स हम लिखेंगे। ओपन इकोनॉमिक्स वो होता है जहाँ पे दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉसिबल हो, जहाँ पे प्राइस का वेरिएशन पॉसिबल हो, जहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ फास्ट होगा, ओके, जैसे ब्राज़ील हो गया। क्लोज इकोनॉमिक्स जहाँ पे नॉट नहीं इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा, है ना, उसमें प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा, नो इफेक्ट जीडीपी स्टेबल यूरोपियन कंट्री यहाँ से, है ना। ओपन इकोनॉमिक्स में जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पॉसिबिलिटी हैं, प्राइस का वेरिएशन होगा, ओके, प्राइस वेरिएशन जीडीपी ग्रोथ विल बी फास्ट here, but in close economics where neither import nor export, price is stable, no effect on GDP and GDP भी stable है। तो ये क्या चाहिए, कौन से साल में ग्लोबलाइजेशन हुआ था, वो इट इज़ इन ईयर 1991 ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ओके। ग्लोबलाइजेशन में मनमोहन सिंह जिनको कहा जाता है रिफॉर्मर, क्योंकि नरसिम्हा राव ने काल में प्रधानमंत्री था और मनमोहन सिंह समय फाइनेंस मिनिस्टर था। नेशनल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों किया था। फिर राव इसको बुलाया था राव मनमोहन मॉडल एक होते हैं, जिससे कहने वाले मॉडल को कि पीवी नरसिम्हा राव था और मनमोहन सिंह था, तो राव मनमोहन मॉडल बना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कोई गिराने के लिए क्या चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा ही सामान जाए, या तो भारत देश जाओ और विदेश से सामान कम हो, तो भारत देश का अर्थव्यवस्था बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने लिखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एज एन स्ट्रगल इन माय लाइफ, लिखा गया था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अलग अलग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ देखेंगे, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ या ठीक है। आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ की बात की जाए, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी मतलब आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे नेशनल, सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स कौन सा, अर्थव्यवस्था गतिविधियाँ कर रहे हैं, जैसे नेशनल इनकम पैदा, नेशनल इनकम पर इनकम क्या होता है, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम, आय, राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है। टैक्सेशन, टैक्सेशन क्या होता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय, टैक्सेशन मतलब कर पाना, कर सिस्टम हो गया। तीसरा हो गया बजट, चौथा हो गया इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति।